So we have discussed yesterday. Start with a master key point. So we have to do this position. We have to release the area that is called suboccipital area. जहां पर हमारी खोपड़ी खत्म होती है वो एरिया हमें रिलीज करना है. Then I told you avoid if the patient is suffering with the low blood pressure. अगर व्यक्ति को लो बीपी है तो अवॉइड करिए. So what we can do for the patient suffering with the low blood pressure, हम patient के लिए हम क्या कर सकते हैं? Then we have another hold. We have to hold the tragus of ear. हमें कान के tragus को hold करना है. The tragus is the acupressure point of adrenal gland. So when you are holding the tragus, जब आप tragus को hold करते हैं, then you are activating the adrenal gland. आप adrenal gland को activate करते हैं, and it's wonderful for the patient who is having low blood pressure, the patient who is having low sugar. What we have to do? We have to hold the tragus. How to hold? I will tell you. I will demonstrate. कैसे hold करना है मैं बताऊंगा आज. So remember one thing: if the patient is suffering with if the patient is having normal condition, if the patient, either the high BP patient or the patient is having normal BP, then we can do this position. हम इस position को कर सकते हैं. And but if the patient is having low blood pressure, still we can do with a precaution. Otherwise, we will do another position where we are holding the tragus. जहां पर हम tragus को hold करेंगे. As soon as you hold the tragus for 3 minutes, you will see the patient suffering with a low blood pressure will be feeling better. इतना करने मात्र से ही उसे अच्छा लगेगा. Right? Why? What is the connection of tragus with the low BP? Because in the tragus we are having the point of adrenal gland. Adrenal gland, you are knowing what is the adrenal gland? आप जानते होंगे. Adrenal gland is the gland located on the top of the kidney. हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है. So adrenal gland also called the cap of kidney, or the other name is suprarenal gland. It is secreting the steroids and like the aldosterone and also some hormone like adrenaline, and they are responsible for raising the blood volume and the blood pressure. So when the person is suffering with the diabetes, जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, or the person is suffering with a high blood pressure, then doctors are trying to avoid any steroid tablet. डॉक्टर स्टेरॉइड की टैबलेट देने को अवॉइड करना चाहते हैं, because once you take the steroid tablet, like many times during the infection, there is a medicines in the form of injections or in the tablet form. Doctors are giving like the prednisolone, okay, or many other medicine. But if the person is taking steroids, they will raise the BP and raise the sugar. So it's a little risky for the patient who is having high blood pressure to take the steroid tablet, but it's not the risky if the patient is having low BP. Because if the patient is having low BP or the low sugar, as soon as you give the steroids, person will feel good. Because steroids are increasing the sugar level and increasing the blood
प्रेशर। स्टूडेंट का काम है इसे बढ़ाना। सो दैट्स व्हाई इफ द पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, वी आर स्टिमुलेटिंग द ट्रैगस ऑफ द ईयर। हम कान के ट्रैगस को होल्ड करके रखते हैं थोड़ी देर तक, and we can see the very significant improvement in the low BP, right? Okay, so done. One, this is the hold number one. This is the hold for master key point, and another is the hold is for tragus. Generally, what I do sometimes, because master key points are very much effective, very, very effective. Today, I did this master key point for one patient, and he got very much relaxed. You know, the location of urinary bladder 10, क्या आपको पता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर 10 पॉइंट कहाँ होता है? आई विल शो यू द लोकेशन। आप सोचिए कि कहाँ होता है यूबी 10। लेट्स सी द लोकेशन हियर। यूबी 10 इज द पॉइंट exactly here. We can see this is the location of UB10, where our occiput is ending, जहां पर हमारा occiput end होता है and neck start होती है, that is the UB10. Let's see this location once again here. So in this image, you can see this is the location of urinary bladder 10 points at the area where occiput is ending and neck is starting. And urinary blood is a very good point to calm down your BP, to calm down your heart. ये अकेला एक ऐसा बिंदु है जो आपके बीपी को और हार्ट को काम डाउन कर देगा। From the midpoint, you have to go 1.3 चुन right and the 1.3 चुन left. हमें मध्य से 1.3 चुन right और left जाना है। ये एक ऐसा बिंदु है, अगर आप इसे दबाते हो, इसको दबाने मात्र से पाल्पिटेशन और बीपी कम हो जाता है। ओनली सिंगल पॉइंट इनफ। इवन यू कैन पुट द magnet in the sujok. If the patient is having palpitation, but suddenly one patient had palpitation in the midnight, एक पेशेंट को रात को 1 बजे palpitation हुआ, बीपी बढ़ गया। जैसे ही हमने उसे कहा और उसने वो ये पॉइंट लगा लिया, UB10 said it, within few minutes start getting relief, and near about 30-40 minutes palpitation and the blood pressure become okay. Only single point, because this is the area of the master key point, and this is the area why we can activate our parasympathetic nervous system, we can activate our vagus nerve, we can activate our relaxation system. हम अपने रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड वी कैन काम डाउन द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। हम सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को काम डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, avoid if the patient is having low BP, or you can do with a precaution, right? What is the precaution? Precaution is this: you stimulate adrenal gland, then master key point, again adrenal gland, then master key point. This is the precaution for the patient having low BP, or just stuck with the adrenal gland point. Okay, let's move ahead. Now, I would like to bring a focus on the multiple problems happening in the head region. हमारे सिर में होने वाली अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, just I will go through once. What we can do if the patient is suffering with the epilepsy? हम epilepsy के पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? Epilepsy means fits, मिर्गी।
What we can do for the patient having dizziness and vertigo, अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं हम क्या कर सकते हैं? What we can do for the patient having sinus congestion, blocked nose, sinusitis, नाक बंद है, साइनस की प्रॉब्लम है. What we can do for the patient having eye strain, maybe because of the overuse of the laptop, mobile. हम क्या कर सकते हैं अगर पेशेंट को आंखों में स्ट्रेन है? व्हाट वी कैन डू इफ द पेशेंट इज हैविंग टिनिटस, रिंगिंग साउंड इन द ईयर, कानों में बजिंग साउंड आना, कानों में दर्द होना, देयर इज ईयर पेन और द हियरिंग लॉस. व्हाट वी कैन डू फॉर द पेशेंट हैविंग पेन इन द टीएमजे, हमारी जबड़े की हड्डियों में दर्द होना. व्हाट वी कैन डू इफ द पेशेंट इज हैविंग नेक एंड द शोल्डर पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन. व्हाट वी कैन डू इफ द पेशेंट इज हैविंग स्लीप इशू, उसे नींद नहीं आती है, or the sleep apnea. What we can do if the patient is having lots of stress, anxiety, बहुत तनाव है, बहुत anxiety है. What we can do, person is having memory problem, उसकी मेमोरी कम हो रही है, भूलने की आदत है, forgetfulness, not focus, और brain fog, not clear thinking, no clear thinking. What we can do for that? What we can do for the patient having nerve pain, seizures, like that, right? तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? What we can do for the patient having allergies, like the sneezing, itchy eyes. So I have told you too many diseases which is happening in the head region, जो सिर में होती है. आप समझ गए होंगे मैंने जितनी बीमारियों की बात कही है वो सिर में होती है, like allergies, running nose, itchy eyes, like fits, nerve pain, like memory problem, like stress anxiety, sleep problems, like neck and shoulder pain. ये सारी सिर की बीमारियां हैं. टीएमजे, जॉ पेन, ईयर प्रॉब्लम, आई स्ट्रेन, साइनस कंजेशन एंड dizziness, vertigo, some few more. Like what we can do, the patient is having headache, migraine headache, and headache is also having many variety. Headache की भी बहुत variety होती है. There is sinus headache because some problem in the sinus, that is called sinus headache. So there is tension headache, migraine headache, cluster headache, the headache because of the high blood pressure, the headache because of the sinus, the headache because of the TMJ problem. So there are too many types of the headache: tension headache, migraine headache, cluster headache, sinus headache. इतनी प्रॉब्लम हमारे सिर में होती है. इन सब का एक ही फॉर्मूला है, वो हम सीखेंगे. सिंगल फॉर्मूला फॉर ऑल, गारंटेड फॉर्मूला. एंड यू डू जस्ट स्टिमुलेशन. What is the meaning of guaranteed? Guaranteed means if out of 10, if you are curing 7 patients, we tell it guaranteed. 70% is in good ratio, right? Like maybe some person is having brain tumor and having migraine headache, maybe your formula will not work. अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, किसी को मैलिग्नेंसी है, वो एक अलग बात है. Otherwise, because if it is the pain because of some other reason, maybe headache because of the menstrual problems during the period, all other type of the headache, migraine headache, tension headache, epilepsy, whatever the problem happening in the head region, we have to work by the following formula which we are going to discuss now. अब हम समझेंगे उसे. So there are two things we have to discuss here. Number one, muscle release. In the head region, there are certain muscles. We have to release them because muscle become stiff. Muscle are going in the spasm. And number two, suture release. We will understand this. इतना ही करना है बस. हमें मसल को रिलीज करना है और suture को रिलीज करना है. There are few sutures, 5 to 6 sutures we have to focus on.
and there are many muscles. We have to focus on them. Okay. So first I will show you few muscles and I will tell you no need to remember the name of the muscle. If you are having some difficulty, if you are not having medical background, but if you remember, it's good. Just you have to understand the area where we are working. हमें उस एरिया पर फोकस करना होगा जहां पर हम काम कर रहे हैं. फिर भी मैं आपको एक बार मसल बताऊंगा, मसल के नाम बताऊंगा. आई विल टेल यू द नेम ऑफ द मसल, देन आई विल टेल यू हाउ टू रिलीज दैट. Right? So the first step, muscle, there are near about 8 to 9 muscle we have to work. Okay, 8 to 9. Why? Muscles are the structures like this: masseter muscle, temporal muscle, frontalis muscle. These all muscles are going in the spasm. Okay. This bone, this bone, this bone are attached with each other by the muscles and some other structure. If we release the muscle, like someone is doing like this, we feel very good. Wow. We are telling do little more, thoda sa aur kar. Why we are feeling good? Just by releasing the muscle, because muscle is storing emotions. Muscles are storing lots of problems. We release the muscle, then we'll work on that. So now I mentioned some diseases. For that we have to work on these 8 to 9 muscles. हमें 8 से 9 मसल पर काम करना है. उन मसल्स के नाम इस प्रकार हैं. So trapezius, upper. Okay. So this is the muscle trapezius. Okay. SCM muscle, suboccipital muscle, scalene muscle, levator muscle, splenius capitis, again SCM muscle, temporalis and splenius cervicis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. You will release this muscle. Person will tell you, I'm feeling much better in my headache. I'm feeling much better in my shoulder pain. मुझे headache में बहुत अच्छा है, shoulder pain में बहुत अच्छा है. I am feeling much better in my entire body. I am feeling much better even in my arm pain. मेरे हाथों में भी अच्छा लग रहा है. I am feeling much better in all the problems, whether the headache or the migraine or the epilepsy. हर चीज पर ये काम करने वाली है. हमने 2 चीजों की बात की, नंबर 1 muscles and number 2 suture. Okay, this is the, I can tell you, 50% work from here and the 50% work from here. Both together will be 100%. They are definitely will be working. After you finish your session, it will take hardly 15 to 20 minutes. Patient will tell you, wow, it's so nice, much better. Okay. So let's start with that. And I will also mention the suture name, then we'll go through one by one with all. Again, no need to remember the suture name. So there are some suture. Suture number 1, 2, 3, 4, and 5. So 5 to 6 suture, we have to work on that. So 8 to 9 muscles and 5 to 6 suture will be working on all the problem that we have discussed. You are treating all the problems in the head region. आप सिर्फ सिर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं.
पेशेंट बोलेगा मेरा कमर दर्द कम हो गया, आई एम फीलिंग मच बेटर इन माई लोअर बैक पेन, आई एम फीलिंग बेटर इन माई नी पेन, आई एम गेटिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड इन माई डाइजेशन, because you are working on the vagus nerve. Okay, so let's proceed. So first muscle, that is suboccipital. Okay, suboccipital. Suboccipital means कि जहां ये खोपड़ी खत्म होती है वहां की मसल, there might be many teeny small muscle where our skull is ending, neck is starting, teeny multiple muscles, they are called sub means below occipital muscle, कि ऑक्सीपिट के नीचे की मसल. तो जैसे कि आई विल शो यू वन इमेज हियर, yeah, look at now. So this is the occiput, and these are the small muscles, teeny muscles. These all muscles group are called suboccipital muscle. Why these muscles are important? Because there are many important structures are passing, like the vertebral artery. कई सारे स्ट्रक्चर पास होते हैं, कई आर्टरी पास होती हैं. यही वो आर्टरी हैं कि जब इनमें ब्लॉकेज हो जाता है, रप्चर हो जाती हैं, तो लोगों को पैरालिसिस हो जाता है. We have to, when we will be discussing this condition, that time also I will mention vertebral artery. There are two arteries supplying the brain. One is vertebral artery, second is another artery that I will tell you. If you balance these two arteries, then you can balance this brain. जैसे खेत में फसल पैदा करना अच्छी, तो क्या करना होगा, खेत को पानी देना होगा. ठीक उसी प्रकार से दो आर्टरी को अगर ठीक से सप्लाई दे दी तो ब्रेन का नरिशमेंट इंप्रूव हो जाएगा. वी कैन इंप्रूव द नरिशमेंट of each and every part of the brain, like cerebrum, cerebellum, pons, medulla oblongata. There are too many parts of the brain. For that we have to work on two arteries, right? One is the vertebral artery. So for that we are working on suboccipital area. हम suboccipital area पे work करेंगे. कैसे करेंगे, कल हम समझ चुके हैं. That is the same condition which we have discussed yesterday. Keeping the hand under the occiput. Okay. There are 4 steps. Yesterday we have discussed 4 steps. अपने हाथों को से खोपड़ी को पकड़ना. First we have to keep the hand under the occiput, then pointing the finger up, then penetrating more and taking the weight of the head on the finger and separating it. Remember, ध्यान है कल का, वो पहला स्टेप, वो हमारी ये मसल्स के लिए, suboccipital muscles and vertebral artery. So because I have done, so I will not repeat that. That is okay. If you have not seen, go through with the video what we have discussed yesterday. Now I will tell you the another technique that is called Flamingo, to release another muscles of this area, because we will go one by one from all the muscles. So now I will show you the muscles here. Then I will show you how to work on that. So I will demonstrate you that how to work in this area. Because the muscles here we can see splenius capitis,
Splenius cervicis, very important muscles found in the neck. Okay, not only this. So we have another very important muscles here. यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मसल है, उसका नाम है trapezius. The trapezius muscle. So we are working here. हम यहाँ पर काम करेंगे. It will relax this entire area. So we are working on the upper trapezius. So we will work in this area now. And the name of technique is Flamingo. Okay, let's start. Give me 1 minute. We will be working on the muscle. हम यहाँ की muscles पर काम करें. Right. In this area. And in this area, our focus is on the trapezius muscle. हमारा focus trapezius muscle पर होगा. And another two muscle, I told you the name, splenius capitis and splenius cervicis. So the step number 1, we will keeping the hand here. And other hand on the other side. Simple, like this. Same. One hand this side like this, another hand this side like this. Okay? And we are making the cross of hand. This is the position. Again, I will do that. One hand here, one hand here. Okay? I will do little compression on the shoulder. Here also, I will grip properly. Okay, now I will start doing step number 1. Just little bending of the neck. Very gentle. Come back. Do it 2 to 3 times. Then I will go to the other side. We can do in the standing position, that is better position. I will go to the other side. And again, I will. Then going to the other side and so in the both side I will. Okay. तो मैं गर्दन को इधर ले जाके भी वही कर रहा हूँ और गर्दन को मैं उधर ले जाके भी कर रहा हूँ. I will keep doing this for near about 1 minute. While doing this, I am stretching all the muscles of the neck and relaxing this entire area. Relax it. After completion of this, I will be keeping my all the fingers below the neck, like this, below the neck. We can see that like this. I can keep my finger. And just I will do pulling the muscles towards me. This is step number 2. Let's see this. You can see I am doing like this. Okay. Now like this. You can see. Just I am pulling the muscles upward towards me. My purpose to release if there is any tension
in the trapezius muscle, splenius capitis, splenius cervicis, or any muscles of this area. Now, I can also do like this. First, I will take my small finger, then ring finger, then middle finger, then index finger, one by one. 1, 2, 3, 4. So this is called Flamingo technique. 1, 2, 3. Taking a small finger, then ring finger, then middle finger, then index finger. So what I'm doing, I'm releasing these all muscles. Okay. So first I did like this in the supine position जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है. मैं आपको दिखा ऐसे नहीं इस पोजीशन में नहीं करना है, हमें करना उसी पोजीशन में है, लेकिन ऐसे कर. फिर मैंने सेकंड बताया कि डू द फ्लैमिंगो, टेक द इंडेक्स फिंगर, all the finger one by one. We have to take like this. Small finger, ring finger, middle finger, and the index finger. Flamingo. See that. So first I am just releasing simply. So my target is 3 muscles. Then सिर को नीचे छोड़ दो. While doing this all, what we are doing, we are activating the proper blood supply and the nerve supply toward the head region. हम सिर की ओर supply को improve कर रहे हैं, right? So we have done first occipital, suboccipital release. We started our treatment yesterday with a suboccipital release. We are keeping our both hands down. हमने दोनों हाथों को नीचे रखा है. On the area where this skull is ending and neck is starting here. This is step number 1. We are keeping the hand like this. Let the finger melt under the muscle. अपनी उंगलियों को मसल में मेल्ट होने दीजिए. Maybe after 30 seconds to 1 minute, pointing the finger upward. Okay, this pointing the finger upward like this. Okay. So after 30 seconds to 1 minute, we are pointing the finger up. Then taking the entire weight of the head of the finger, हमने सिर का सारा वजन फिंगर पे ले लिया. अब हमारे हथेलियों पर कोई वजन नहीं है. You can see my hands are free. You can see all the weight under the finger. Keep guiding patient. Do not hold the head. Patient को guide करिए कि अपने सिर को hold करके ना रखें. And step number 4, separating the fingers.
like this, separating the finger like this. So this was the suboccipital release. This process will take 3 to 5 minutes. Okay, after this, we will be focusing on the procedure of today on the trapezius muscle and other two muscles. So we are keeping one hand here, one hand here. Doing 3 times stimulation to do 3 times, 1, 2, and 3. Yes. Both sides. This is the step number, this is the process number 2. Gently release it. The process number 3. We are releasing this muscle area, entire neck area. So keeping the finger like this, we just release and then do flamingo. Flamingo means 1 by 1 finger. So first normal release. We are doing 30 seconds to 1 minute normal release. Then flamingo. So in this way, anyone not able to understand anything? If like that, please let me know. सबको समझ में आया? Yes. See, there are many processes we will be learning for ourselves, and there are many other processes we will be learning for patients. हमें बहुत सारे प्रोसेस पेशेंट के लिए भी सीखना है, because this course is focusing on the skill that you can understand how to perform the treatment for the patient. Is it clear? तो मीरा जी का प्रश्न है कि हम अपने लिए कैसे करें? देखो, ये बात है कि जब गर्दन को रिलीज करना है तो और किसी से ही करवाना होगा, राइट? लेकिन और अभी कई सारे पॉइंट्स आएंगे फॉर सेल्फ एक्यूप्रेशर विच कैन बी डन फॉर योर सेल्फ. लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है एपिलेप्सी का, you might get some patient of migraine, you might get some patient of headache, then tinnitus, ringing sound, hearing problem. You should also know that how to do for that. देखो, इसका रियल इफेक्ट तो तब आएगा जब रिसीवर एकदम शांत भाव से लेटा होगा. अगर आप खुद को करेंगे तो इफेक्ट आएगा, लेकिन maybe 50-60%. But if you become the patient and just you are in the very relaxed mode and someone else is doing, then you will be getting more effect. Got it? So this was we have discussed 4 muscles till now. Let's move to another process. Any question? Whatever the problem happening in the head area, it will be working. Yeah, definitely, because in full body, we are going to discuss other points, because we have started with the head, then we'll discuss the arm,
We'll discuss the spine and the upper middle back, lower back, step by step with moving. So we will be learning entire body. But even doing the treatment, the head region will be working in entire body. आप सिर्फ हेड रीजन में ट्रीटमेंट करोगे, वह भी पूरे शरीर में काम करने वाला है. How does this help for all the organs? Yeah, because entire body. अब ये बताइए कि जब फीमेल को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है तो सिर दर्द होता है ना, कईयों को होता है कि नहीं होता? Why the females, many females having migraine headache during the menstruation? Because the body is one unit. Why the patient is suffering with the constipation and irritability? Why the patient is having constipation and breathing problem? There is a combination. Our mood is the result of, हमारा जो मूड है ना, हमारा ब्रेन, हमारा मूड, वो पूरी बॉडी का एक एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? सो दैट्स व्हाई बॉडी इज द सिंगल यूनिट. Yeah, tinnitus, I already told you. For the tinnitus also, this is the same. We have to follow two process. Number one, muscle release. Number two, suture. तो हम tinnitus पर भी वर्क करेंगे, हम यहाँ के suture को रिलीज करेंगे. I will tell you one more thing. When we are releasing one suture here, जब हम यहाँ से हम एक suture रिलीज करते हैं, वहां से 3 नर्व हमारी बॉडी को जाती है, तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में पड़ता है. Right now our focus is head region, but while doing the treatment of the head region, patient will tell you, I'm feeling better, I'm feeling lightness in my body, I'm feeling better in my body, in each and every part. Yes. So yeah, for each and every problem happening in the upper part will work, but we will be taking topic one by one. हम सारे टॉपिक को एक एक करके लेंगे ना, अभी जैसे हेडेक लिया, ऐसा करके लेंगे. सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे. आज के लिए इतना काफी है. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में. maybe tomorrow. All of you are comfortable? We'll announce in the final group. अभी हम जिन लोगों ने एनरोल किया है, अब क्लास उनके लिए होगी मात्र. The participant who has enrolled, the class will be only for them. The link will be sent in the final group. The name of the final group is 183 number group, HS 183. Any question, Bindu ji? Yes, please ask. हाँ नमस्ते सर. सर कल जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखे थे, वो लेफ्ट हैंड में करने हैं कि राइट हैंड में करने हैं कि दोनों हाथों में करने हैं? कल कौन से पॉइंट देखे थे हमने? ये पैराकार्डियम 6, हार्ट 7, स्प्लीन 6, ये जो, वो हम दोनों हाथों में कर सकते हैं, किसी भी हाथ में कर सकते हैं. लेकिन अगर अच्छा. वैसे तो हम किसी भी हैंड में कर सकते हैं, ऐसा तो हमने कोई लिख नहीं किया. वी कैन डू इन बोथ हैंड्स. ओके. तो इवन आगे भी जो भी होंगे, तो इफ इट इज पर्टिकुलर सिंगल हैंड, तो आप बोलेंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड में करना है कि राइट हैंड में करना है, या लेडीज को इसमें करना है और जेंट्स को इसमें करना है? हाँ, मैं बताऊंगा इस डेफिनेटली. ओके, थैंक यू सो मच सर. या वेलकम. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स क्लोज. सी यू टुमारो. गुड नाइट. ओके, सवाब अली जी का क्वेश्चन है, जवाब देते हैं. यस प्लीज. सवाब अली जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो. हेलो. हेलो सर. हेलो. हाँ बोलिए सवाब अली जी. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. हेलो. हाँ बोलिए सवाब जी. गुड इवनिंग सर. हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने
प्रोटोकॉल बताया था कल। जी। हाँ जी। सर क्या मेरी आवाज आपको आ रही? आ रही है, आ रही है। तो सर क्या वो प्रोटोकॉल सर हम दिन में पेशेंट के 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं? आप वो कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, हार्ट 7 पेरिकार्डियम 6 वाले की? जी 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 सर जी। 2 बार क्या अप्लाई करना है? जैसे हम पेशेंट को हम सुबह शाम की सिटिंग में बुलाते हैं, क्या सुबह शाम भी कर सकते हैं, क्या दिन में एक ही बार करना होगा वो? आप निडल लगाते हैं कि मैग्नेट्स? जी मैं सर निडिल लगाता हूँ, एक्चुअली मैं तो पंचर करता हूँ सर, आपके सारे प्रोटोकॉल यूज अप्लाई करता हूँ। एक एक बार बहुत है, एक बार काफी है। अच्छा 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 अच्छा। तो कभी जो कभी जैसे आपने बताया कि एक दिन छोड़ के लगाना चाहिए, तो सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, वो सबसे बेस्ट होता है। जब आप पेशेंट को ब्रेक देके लगाते हो तो वो जी सबसे जी। बेस्ट होता है, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा सर, ये अब जो एक्यूप्रेशर की जो अभी क्लास चल रही है, उसके बाद खत्म होने के बाद एक्यूपंक्चर की क्लास, कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी नए उसकी सेशन? हाँ मतलब स्टार्ट होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, होगी डेफिनेटली, ना कुछ तो होगा ही। जी 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 अच्छा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर दिस इज नीलम फ्रॉम दिल्ली। या और इसमें कवरेज क्या है, पूरी होल बॉडी, ऑल ऑल प्रॉब्लम्स, या क्या मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स एन इनिशियल कोर्स और इट इज अ मिडिल साइड कोर्स, जिनको सब कुछ आता है उनके लिए, या बिगिनर्स के लिए, या एडवांस के लिए? ये कोर्स एकदम उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी इसमें हम सब कुछ इसमें बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे, क्योंकि एनएसडीसी का कोर्स है, तो हमें उनके फॉर्मेट को फॉलो करना है। उस फॉर्मेट के अनुसार जिन लोगों ने अभी अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है इस फील्ड में, उनको जी। समझना है, उस तरह से करना है। इसमें क्या सिखाएंगे, वो पूरा व्हाट्सएप मैसेज में जो हमने अभी सर्कुलेट किया था ना, सब पूरा सिलेबस हमने मेंशन किया है कि हम मैं देखूंगी, बात मुझे करें। पता नहीं है कि आया है कि नहीं, मैंने देखा नहीं मतलब है इसमें इसमें। पूरी बॉडी कवर होगी लगभग, की है ना, लेकिन फिर भी कई एंड यू कैन प्रैक्टिस आफ्टर दैट, राइट? आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द कोर्स यू आर एबल टू प्रैक्टिस, इज दिस दैट मच efficiency you get हाँ, after यस completing? डेफिनेटली यस। And is there an exam for this? या एग्जाम विल बी देयर एट द कंप्लीशन। And certification is also there? यस, It's there. एग्जाम होगा, इसीलिए मैं कल का वीडियो देखिएगा, है ना, कल नहीं देखा ना? कल का वीडियो अपलोड नहीं मैंने नहीं किया। I missed it. I didn't know. I happened to see it today only. तो कल का वीडियो देखिएगा, इसमें हमने सब ये बताया है जो आप पूछ रहे हैं ना। जी। इसमें शुरू के 15 मिनट में यही डिस्कस किया था कि कोर्स कैसे होगा, कितने दिन होगा, एग्जाम होगा, क्या होगा, सब डिस्कस किया है। एक बार गो थ्रू हो जाइए उससे, आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी दिखाया हमने, सब कुछ बताया उसमें। अच्छा, टाइमिंग्स और बता दीजिए सर, थोड़ा सा क्या? बस। टाइमिंग्स क्या रहेंगे, अगर वीकेंड्स पे रहेगा तो रात को टाइमिंग्स? 8 से 9। रात को 8 बजे से। ठीक है सर, ओके, फाइन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अनम्यूट करिए रविजीत कौर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जैसे वो गर्दन के पीछे मसल को रिलैक्स कर रहे थे, वो ऊपर से नीचे कर रहे थे या नीचे से ऊपर को कर रहे थे? C7 से C1 की ओर, यानी पीछे मतलब नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर। तभी वो एक पुल आएगा ना, जैसे हम किसी चीज को खींचना चाहते हैं ना, तो हाँ ऐसे जी हाँ कर जी। सकते हैं। ऐसे जाएंगे तो वो खींचेगी नहीं, है ना, तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा? नहीं, इधर से इधर की ओर, मेरी ओर मैं खींच रहा हूँ अपनी ओर। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ जाए। थैंक जी, यू सर। बस यही वो, क्योंकि आपके हाथ नीचे था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ इसीलिए भी। मैंने पूछा था बार बार कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने पूछा था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए, है ना। एक्चुअली कुछ मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा चलो मैं बाद में पूछ लूंगी कि वो हाथ ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, क्योंकि वो नीचे था यानी ना सिर ज्यादा। पीठ से सिर की ओर जाता है ना, पीठ से सिर की ओर। सिर की ओर जा रहा ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। है। Done. Fine. So let's close the session. See you in the next class. Good night.